Good morning, students. In the last class, we have completed a topic that is supply curve and its slope, and what is the difference between the individual supply schedule, market supply schedule, and the difference between the individual supply curve, market supply curve, as well as we have also studied the exceptions to the law of supply, and we have started a topic that is supply function. So simply supply function means it is the functional supply function explain the relationship between the supply of the commodity, means supply of the commodity, to the other factors which determining the supply. Okay, so these all are the supply function. And what are the other factors which affecting the supply? These all are the price of the commodity, technology change, price of the other inputs, taxation and subsidy policy of the government, number of firms, etc. Okay, so it is of two types. Supply function are of two types. First one is individual supply function, second one is market supply function. Okay, so in individual supply function, these all are the factors which affecting the supply, and in the market supply function, these all are the factors which affecting the supply. Okay, so let's start. What is individual supply function or others factors or the determinants which affecting the individual supply curve? Okay, so individual supply function express the functional relationship between the supply and factors affecting the supply of a commodity by an individual seller. Okay, so simply individual supply function क्या एक्सप्रेस करता है? ये रिलेशनशिप एक्सप्रेस करता है किसके किसके बिटवीन सप्लाई और फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी. Supply or others factor, जो others factor whatever they affecting the supply of a commodity by an individual seller. ठीक है, इंडिविजुअल सेलर की बात करता है यहाँ पे, क्योंकि वी आर ड्राइंग हियर इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन, so that we are studying here the individual supply function. So the in the market there is only one seller, that is a single any individual. So supply function is the QX, or the QX means quantity of a commodity, or we can also write like SX, which means supply of a commodity. So it is a functional relationship between these factors, which means price of the commodity, technology change, price of the other inputs, taxation and subsidy policy of the government. Okay, we will study these factors one by one. Okay, so first one is price of the commodity. We know very well, here we will operate or apply the law of supply, because in the law of supply we see the relation between the price of the commodity and quantity supplied of the commodity. So we can say that there is positive relation between the price of the commodity and the quantity supplied of a commodity. If the price of the one commodity increases, so the quantity supplied of the commodity will also increases. If the price of the commodity is decreases, then the quantity supplied of a commodity is also decreases. Okay, there is positive relation between the price and the quantity supplied. Okay, so here we do not understand too much, because we know very well law of supply, so law of supply will apply here. Next one is technology changes. Science and research laboratories around the world, as well as business firms, look for the new technologies or method to increase productivity and reduce cost of production.
improvement or advancement in technology lowers the marginal cost at a given level of output and raises the profit margin. As a result, investment increases, production increases, and supply also increases. Okay, so science and research laboratories around the world as well as the business firm look for the new technology. We know very well there are different laboratories in all over the world, research laboratories in which every time there are new and new inventions वर happen there कि कोई ना कोई नया इन्वेंशन होता रहता है कि हम कैसे अपनी जो प्रेजेंट कंडीशन से कैसे और उसको मोर वर्थ कर सकते हैं, वो चाहे किसी भी एरिया में हो. बेसिकली अगर हम लोग को प्रोडक्शन भी करना है तो कुछ ऐसी ऐसी मशीन्स को बनती रहती हैं, कुछ प्रैक्टिस उसकी होती रहती है कि हम अपना प्रोडक्टिविटी क्या कर सके, अपनी इनकम उसी के थ्रू इंक्रीज़ कर सके. सो firms as well as the world also look for the new technologies और मेथड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. डिफरेंट मेथड्स को वो देखते हैं कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज कर सके एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. जो कॉस्ट हो रहा है प्रोडक्शन का कोई भी कमोडिटी का, वो क्या हो, रिड्यूस हो जाए कॉस्ट, और प्रोडक्टिविटी क्या हो जाए, वो इंक्रीज हो जाए. ओके, सो फर्स्ट इज इम्प्रूवमेंट और advancement in technology lower the marginal cost of at given level of output. Okay, अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट और एडवांसमेंट हो जा रहा है किसी भी टेक्नोलॉजी में, तो ये क्या कर रहा है, किसी भी कंपनी का, बिजनेस का और किसी फर्म का, इंडिविजुअल का जो कॉस्ट है फॉर प्रोड्यूसिंग दी एनी आउटपुट, इससे क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है. ठीक है, पहले हमारे पास कोई मशीन नहीं होती थी, टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, तो क्या होता था, कॉस्ट बहुत ज़्यादा इनकर होता था और प्रोडक्टिविटी क्या होती थी, प्रोडक्शन बहुत कम होता था. बट अगर इसमें इम्प्रूवमेंट हो गया तो क्या है, अब हमारा कॉस्ट कम होने लगेगा और प्रोडक्टिविटी क्या होगी, वो ज़्यादा होने लगेगी. सो एट गिवन लेवल ऑफ आउटपुट एंड रेजेस दी प्रॉफिट मार्जिन. प्रॉफिट मार्जिन को भी क्या करेगा, वो रेज करेगा, इंक्रीज करेगा. As a result, the investment increases, production increases, and supply also increases. Okay, as a result, what we will see, we see that the investment क्या होगा, वो increase करेगा. ठीक, जब अभी किसी बिजनेस फर्म को ये पता है कि अगर उसका अब वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, तो इन्वेस्टमेंट वो इंक्रीज़ करेगा. इन्वेस्टमेंट जब वो इंक्रीज़ करेगा तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगा, जो कमोडिटी वो प्रोड्यूस कर रहा है दैट विल ऑल्सो इंक्रीज़ एंड सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेज. फिर उसकी सप्लाई भी इंक्रीज़ हो जाएगी. ओके, सो हियर वी कैन सी दैट here the price is taken as the constant 10 and quantity supplied is, when the price is 10, quantity supplied is 4. When the price is 10, quantity supplied is 8. Okay, so we will plot all these points on the diagram. Okay, price and quantity. So price is 10, 2, 4, 6, 8. Okay, so price is constant, so we will draw a horizontal line and 4 and 8. So the supply curve is SS and it will shift it to the, when quantity supplied become 8, so S1 S1. Okay, so when the improvement in technology or advancement in technology, the production will investment will increases, production will increases as well as supply also increases, so that supply curve will if the anything is increasing in a positive manner, so that the curve will shifted to the rightward. So in this case also the supply curve is also
shifted to the rightward. Okay, so with improvement in technology, supply curve shift to the right. Supply curve is shifting to the right, indicating increase in supply from SS to S1 S1. Okay, when there is improvement in technology, so it will also seen that the investment, production as well as supply also increases. Okay, now the next one is if technology deteriorates, means अब टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, डिक्लाइन कर रही है, अभी तक इम्प्रूव कर रही थी. सो MC rises, which reduces the profit margin, the investment falls, production falls, and also the supply, causing leftward shift in the supply curve. Okay, if technology is deteriorates, means technology is now declining. टेक्नोलॉजी डिक्लाइन करेगा तो जो कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट है फॉर प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी इज़ इंक्रीजिंग. जब कॉस्ट हमारा ज़्यादा हो रहा है तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, वो डिक्लाइन करेगा. द इन्वेस्टमेंट फॉल, जब प्रॉफिट डिक्लाइन करेगा तो किसी भी इंडिविजुअल सेलर के पास उतना मनी फंड नहीं होगा कि वो मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट करे. जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो प्रोडक्शन फॉल होगा. इफ़ द प्रोडक्शन फॉल्स, सो supply will also the falls, and it will ultimately change in the supply curve, that the supply curve will shift to the leftward. Okay, so when the price, here we are taken as the price is constant 10, quantity supplied is 8 and it declining to up to 4. Okay, so we can draw a diagram, price and quantity. Price 2, 4, 6, 8. Okay, first of all the price is 8, sorry, quantity is 8. Okay, we will draw this SS curve. But now the investment fall, production fall, and also the supply, so that it will shift to the leftward. So on the 4th, yes, S1 S1. Okay, so the supply curve will shift to the leftward because technology is declining. Okay, technology are not able to do more and more productivity, increase the production, increase the margin of the profit of the in the seller, as well as it also increases the investment. Ultimately the supply will also decline and it will shift to the leftward. Okay, so first of the when the technologies change, technology change in two aspect, that is when the technology improve and when the technology is deteriorates. Means if the technology improve, so that the marginal cost of the seller will be declined, as well as the profit margin of the individual increases, so that investment also increases, production also increases, and the supply also increases, so that supply curve will shift to the rightward. Okay, but in the case of if technology is deteriorating, okay, means declining, in this case marginal cost is increases, so that the profit, the margin of the profit for the individual seller is also declining. When the cost increases, the profit will declining, so that investment falls, production also falls, and the also the supply. That's why the curve is shifting to the leftward. Okay, so with the outdated technology, the supply curve shift to the leftward, indicating decrease in the supply from SS to S1. Okay, here the producer is using the outdated technology, and the outdated technology are not capable to do more and more production. Okay, वो
जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है अब उसमें इतनी कैपेसिटी कैपेबल नहीं है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाए, इसलिए क्या हो रहा है कि कॉस्ट उसका ज़्यादा इंक्रीज़ हो जा रहा है और आपका प्रॉफिट क्या है वो डिक्लाइन कर जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इनपुट प्राइस चेंज व्हेन द input price changes. Input price means there are various inputs are hired or using when the any commodity is produced. Change in price of inputs, that is factor and non-factor, also affect the marginal cost and hence supply. If input price falls, MC falls, profit margin increases. As a result, the investment increases, production rises, supply rises, and the supply curve shift to the right from SS to S1, S1. Okay. So, change in the price of input. If there is change in price of the input, whatever the different factors and non-factors cost are incurring while we are hiring the different kind of inputs, it also affect the marginal cost. Okay, कॉस्ट को अफेक्ट करेगा क्योंकि हम कोई भी कमोडिटी इनपुट्स को परचेस कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हम लोग उस पर कुछ कॉस्ट इनकर कर रहे हैं ना, तो ये क्या होगा कि कॉस्ट को अफेक्ट करेगा. सो इफ़ द इनपुट प्राइस फॉल मीन्स अगर कोई भी रॉ मटेरियल फॉर एग्जांपल पहले वो 20 का मिल रहा था, ओके, रॉ मटेरियल, ओके, बट इफ द इनपुट प्राइस फॉल्स, so it decline in up to the 10. So if input price fall, प्राइस हमारा 20 से 10 फॉल कर गया है, सो हमारा मार्जिनल कॉस्ट ऑल्सो फॉल बिकॉज इन फर्स्ट वी आर providing or giving the 20 MC, but now we are giving the 10 marginal cost, so that marginal cost भी हमारा decline किया है and the profit margin increases. If the cost of producing any commodity is falling, so that profit of the any company is rising, because in first condition the seller has to given the 20 rupees for hiring the product, for hiring the input, but now he has saved his 10 rupees, so that his profit margin also increases. As a result, investment increases, production rises, supply rises, and the supply curve shift to the right from SS to S1, S1. Okay. अभी क्या होगा एज अ रिज़ल्ट, इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट अगर कॉस्ट हमारी बच रही है, प्रॉफिट हमारा ज़्यादा हो रहा है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, सेलर क्या करेगा, सेलर विल इन्वेस्ट मोर एंड मोर, so that production will also be more and the supply will also be increasing, and when the supply increases then the supply curve shift to the rightward. Okay, so here the price of the commodity is 10 and quantity supplied as 4 and it increases to 8. So we will plot all these value in the diagram. Here we have taken the price of the commodity and quantity, so it is parallel to the x-axis, and we can also see that at the first price the quantity supplied is 4, but now the marginal cost decreases. When the input price falls, marginal cost also falls as well as profit increases. इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस, इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ करेगा क्योंकि अब उसके पास क्या है, एनफ अमाउंट है कि वो मोर एंड मोर इन्वेस्ट कर सके. प्रोडक्शन भी राइज करेगा, जब इन्वेस्ट करेगा तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ करेगा. देन सप्लाई राइजेस एंड द सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट वर्ड. ओके, S1, S1. So it will shift it to the right word. Next is, if input price rises, MC rises, which lowers the profit margin. The investment falls, production falls, and the supply falls.
and the supply curve shift to the left from SS to S1, S1. For example, if the input price, priorly the input prices, input price, it was 20. Okay, now the input price become IP input price become 30. It means, इसका मतलब क्या हो रहा है? It means the cost of purchasing or hiring the input is increases or not? Increases ना, कि पहले वो 20 में ही सारे इनपुट उसको मिल जा रहा था, प्राइस उसको इनपुट प्राइस कितनी 20 ही देना पड़ रहा था, बट अब क्या हो गया, इनपुट प्राइस इंक्रीज़ कर गया है, अब उसको 30 रुपीज़ देना पड़ रहा है। डैट मीन्स उसका कॉस्ट भी क्या हो गया, इंक्रीज़ कर गया। जब कॉस्ट इंक्रीज़ कर गया तो उसका प्रॉफिट डिक्रीज़ कर गया, क्योंकि कॉस्ट अब उसको ज़्यादा देना पड़ रहा है तो उसके पास कम मार्जिन में प्रॉफिट बचा ना, कम मार्जिन में इनकम बची। सो दैट कॉस्ट के इंक्रीज़ होने के साथ उसका प्रॉफिट डिक्रीज़ हो रहा है। अब जब उसके पास फंड नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो नाउ हाउ ही और शी इज़ एबल टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर मनी, सो दैट इन्वेस्टमेंट विल ऑल्सो फॉल। इन्वेस्टमेंट क्या होगा, वो फॉल हो जाएगा, प्रोडक्शन भी फॉल हो जाएगा। अब वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहा है किसी भी एरिया में, बिजनेस में, तो प्रोडक्शन भी अल्टीमेटली फॉल हो जाएगा। जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो वो सप्लाई क्या करेगा, तो देन सप्लाई विल ऑल्सो फॉल and the supply curve, when the supply fall, then the supply curve will shift to the leftward. Okay, so you see here, price of the commodity 10, quantity 8, price of the commodity is 10, quantity decline up to 4. Okay, so here on the x-axis we have taken the quantity, on the y-axis we have taken the price. Okay, so it is horizontal to x-axis, and the first one quantity is 8, but if the input price rises, cost will rises, which lowers the profit of the business, then investment fall, production fall, and the supply will also fall. It ultimately, the supply curve will shift to the leftward. Okay, it will shift, ये क्या होगा, वो शिफ्ट हो जाएगा, सो दैट S1 will draw. Now the next factors which affecting the individual supply function is change in taxation and subsidy policy. Till now what we have studied, what are the different factors which affecting the supply? First one is price of the commodity, second is technology changes, third is price of the input, when there is change in price of input, whether it is increases or decreases. So the next one is change in the taxation and the subsidy policy of the government. Okay, when there is change in the taxation and subsidy policy of the government, what will impact we see on the supply curve? So government imposes various type of taxes on production. Some examples of the tax levied on the production are sales tax, excise tax, custom duty, octroi, etc. Similar subsidies are provided by the government on certain products to encourage production. Therefore, a change in the tax rate and subsidy will affect the overall marginal cost and the supply curve. Okay, we know very well that government imposes various type of taxes on the production. Okay, गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत टाइप के टैक्सेस इम्पोज करती है ऑन दी प्रोडक्शन, कि कोई भी प्रोडक्शन में कोई प्रोडक्शन कर रहा है, कोई भी प्रोड्यूसर, in that case producer has to pay some kind of taxes to the government. So it is the one of the revenue for the government, because ये revenue है government का, कि government को taxes के through क्या होती है, बहुत income मिलती है. So some example of taxes levied on the production are, there are some taxes which are levied on the production, जो production पे levied होती है. These all are the sales tax,
excise tax, custom duty, octroi. Okay, these all are the indirect taxes. So these taxes are imposed on the production of the goods and services. Okay, and every producer have to pay all these taxes. So similarly, subsidies are provided by the government on certain products to encourage product. Just like that, the government will also provide different kind of assistance or help to the producers on a certain products, because of they can encourage the production of the commodity. कि इसी तरह क्या होती है, जो सब्सिडीज गवर्नमेंट भी किसी किसी प्रोडक्ट पे प्रोवाइड करती है टू इनकरेज प्रोडक्शन। जैसे जो प्रोड्यूसर हैं वो क्या हो, एनकरेज हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, प्रोडक्शन करें। Therefore, a change in the tax rate and subsidy will affect the overall marginal cost and the supply curve. Okay, so इससे रिजल्ट में क्या होगा कि चेंज टैक्स रेट में भी चेंज, a change in the tax rate as well as subsidy will affect the overall marginal cost and the supply curve. Okay, when the government imposing tax as well as when government providing the subsidies, so it will changes the marginal cost of the producer, and ultimately supply curve will also change. Okay, now next is in this, if tax rate decreases or subsidy increases, in which we studied the two cases, if the tax rate decreases and subsidy increases, and second one is if tax rate increases or subsidy decreases, what will happen to the marginal cost and the supply curve. If the tax rate decreases means जो टैक्स रेट है, गवर्नमेंट टैक्स रेट पहले वो 8% पे ले रही थी, अब गवर्नमेंट क्या कर दी है, टैक्स रेट को डिक्रीज़ करके 6% पे कर दी है। ओके, एंड इज द सब्सिडी इंक्रीजेज, सब्सिडी गवर्नमेंट क्या कर दी है, इंक्रीज़ कर दी है। सब्सिडी इंक्रीज़ करने का मतलब क्या है कि पहले लोगों को 1400 की सब्सिडी मिल रही थी, 1400 की सब्सिडी मिल रही थी कोई भी वीट को प्रोडक्शन करने का या इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करने का। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, 1800 पे इंक्रीज़ कर दिया है, विच मीन्स टैक्स रेट अगर डिक्रीज़ हो गई, सब्सिडी इंक्रीज़ हो गई, सो दिस कंडीशन इज़ प्रॉफिटेबल फॉर दी एनी प्रोड्यूसर, ओके, और एनी सप्लायर, बिकॉज अब क्या है, किसी भी प्रोड्यूसर और सप्लायर को अगर टैक्स रेट डिक्रीज़ होने का मतलब ये हो गया कि अब कोई भी सप्लायर को 8% की जगह 6% टैक्स पे करना है, तो इट विल बी द प्रॉफिटेबल कंडीशन फॉर दी सप्लायर, कि अब उसके लिए ये प्रॉफिटेबल कंडीशन हो गई कि अब उसे लेस अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना है। और इफ़ सब्सिडी इंक्रीज़ हो गई, सब्सिडी गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ कर दिया, पहले 1400 मिल रही थी, नाउ इट इज़ 1800, सो इट विल ऑल्सो दी बेनिफिशियल और पॉजिटिव रिजल्ट फॉर दी एनी सप्लायर। सो इससे क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीजेज, द कॉस्ट क्या है, पहले 8% पे वो लोग टैक्स पे कर रहे थे, अब 6% पे कर रहे हैं, विच मीन्स टैक्स रेट क्या हो, मार्जिनल कॉस्ट क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया है, और प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ हो गया है। मीन्स अब कोई भी प्रोड्यूसर क्या कर सकता है, सेलर क्या करेगा, वो मोर एंड मोर कमोडिटी को प्रोड्यूस करेगा। द इन्वेस्टमेंट राइजेज, इफ़ द प्रॉफिट इंक्रीजेज देन द investment also rises, production also rises, and supply rises. So the supply curve shift to the rightward. Okay, so we will see a schedule that is price is 10 and quantity supplied is 4 and 8. So the curve will shift to the rightward because the cost of producing the commodity is decreases and the profit is increases, so the investment be increases, production also increases, and then supply increases, and when the supply increases
the supply curve will shift to the rightward. Okay, now just opposite with the, if the tax rate increases. So if the tax rate increases, priorly the tax rate is 8%, now the tax rate becomes 10%, and subsidy priorly it was given 1400, now it becomes 1000. So which means that now the supplier has to pay more and more taxes. Priorly he has paying only 8%, now he has to pay 10%, and the subsidy is decreases. Priorly he got the 1400 subsidy, now the subsidy decreases to 1000. So both condition for the सप्लायर इज़ नॉट फेवरेबल. ओके, वो ये फेवरेबल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि अब किसी भी सप्लायर को ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है. ज़्यादा टैक्स पे करने का मतलब है कि उसके लिए प्रॉफिट कंडीशन है नहीं. अब पहले इसको क्या था, 1400 की सब्सिडी मिल रही थी, अब वो भी नहीं मिल रही है. इट मीन्स इट विल दी लॉस फॉर एनी सप्लायर. सो दैट MC increases, the cost of producing the commodity will increases, and the which lowers the profit margin. Profit of the any supplier will decreases, which means investment fall when there is no kind of profit, so that investors or as well as supplier will decrease their investment, so that production also falls, supply also decreases, and when the supply decreases, the supply curve will shift to the leftward. Okay, so here we will take the schedule, that is 10-10 quantity supplied is also decreases from 8 to 4. Now the curve is shifting to the leftward because the supply is decreases. Okay, it's all about your today's class.